So we was discussing about the different additives in the pharmaceuticals, excipient in the pharmaceuticals. So along with the drug, you have to use excipient for different purpose, right? So we was discussing about that, and in the yesterday session we have seen different additives used in the, okay, use whatever additional points are there. These additives are important. They used to ask you a lot of times the trade name of additives, trade name, their composition, and all this part. So yesterday we have seen the different ways of transformation in the compound. We have also seen prodrugs. We have also seen what is the salt formation, examples of salt formation. We have seen the biopharmaceutical aspects while designing a dosage form, absorption from GIT also. Yesterday we have seen colors. So if you want to read more about this, there is a two, I think there is a three charts given in the Lachman. But whatever is important, I have discussed. Yesterday we was at this slide. We'll start from this slide. Now sweeteners, okay. Now flavors, again very important. इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं DI के एग्जाम में एंड GPAT के एग्जाम में. So again flavors used in the formulation. So what type of flavors? So what is the purpose of flavor? Purpose of flavor is nothing but the, if drug is having very bad taste, if drug is having bitter smell, etc., etc. So it is used to make the medicine palatable, so that patient will take that medicine happily. So flavors are used to make the medicine palatable, and I hope I am audible you. Are you able to see the screen properly? Screen दिसताय का? Screen दिसताय का? Yes or no? So they are used to make the medicine palatable. They are used to improve the taste. They are used to improve the flavors are used to improve the taste. Now what is taste? Taste is nothing but the, okay, flavors are used to make the medicine palatable, to improve the taste, and to improve the feeling factor. What is feeling factor? So what kind of taste you feel when medicine is in a mouth? So feeling factor. And they are also used to improve the odor. Odor. Now taste is nothing but the, it is nothing but the stimulus felt on a taste bud. So taste buds are nothing but the, they are the nerve endings which are present on the, your tongue के ऊपर ना. Taste is felt like sweet taste, then sour taste, then bitter taste, then salty taste, or then umami taste. So these are the some descriptions of taste. टेस्ट को डिस्क्राइब करने के लिए अपन ये टर्म्स यूज करते हैं. कौन से टेस्ट क्या कैसे हो सकती है? टेस्ट आपका ना, आपके टेस्ट जो है स्वीट हो सकती है, जो आप सबको पसंद आती है स्वीट टेस्ट. और टेस्ट में भी सोर ओके, सोर एक्रिड, इट में भी बिटर सॉल्टी ना, कड़वा हो सकता है, नमकीन हो सकता है ना, एसिडिक सोर टेस्ट हो सकता है. एंड umami, I don't know what is umami, but there is one kind of taste. Now feeling factor is nothing but the, feeling factor क्या होता है कि when you will feel something on your taste bud, so it might be numb हो जाएगा आपका, और cooling sensation or burning sensation in the, so that occurs when nerve endings are stimulated. Now what is feeling factor? How you feel that? So either numbness or coolness or burning sensation that occurs in the, at the nerve ending when it is stimulated, right? Now flavoring agent, it may be either natural flavoring agent or it may be either artificial. So natural, artificial, or natural and artificial, दोनों का combination. Natural flavor or artificial flavor, or natural and artificial. Now in this flavoring agent, aroma is main principle responsible for the flavor. That aroma is only 10%. Remaining 90% is nothing but the carrier. So जो फ्लेवरिंग एजेंट होता है उसमें 10% ही क्या होता है? अरोमा होता है. 10% ही उसमें स्मेल होता है. बाकी जो 90% जो क्या है, that is known as a carrier. So only 10% aroma is adds up on a carrier. Now choice of carrier depends on the physical form of flavor. फ्लेवर का फॉर्म कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा कैरियर यूज करना है ना, राइट. सो फॉर ड्राई फ्लेवर्स, जो ड्राई फ्लेवर्स है which are solid, okay. So dry flavors like crystalline vanillin, cinnamon powder, dried lemon, fruit extract,
So these are plated on the maltodextrin, that is a carrier. Okay, then modified starches, maltodextrin modified starches, dextrose or gum arabic. So whatever flavor like crystalline vanillin, cinnamon powder, dried lemon extract, they are plated, they are coated on a maltodextrin or modified starches or dextrose or gum arabic. Now for liquid flavor, you can see liquid flavor. Now liquid flavors mostly volatile oils, fluid extract, tinctures and distillate from the different aromatic plants. So carrier used is nothing but the propylene glycol or ethylene glycol. So देखो aroma is very important for flavor. If a drug is having bitter taste, if drug is having very bitter smell, so basically it is not palatable. To make that drug or dosage form palatable, you are using flavoring agent, right? You are using flavors. Now, so that may be either okay, that may be either solid flavor like crystalline vanillin, cinnamon powder, dried lemon, or fluid extract. It may be either liquid flavor. Carriers for respective form of flavor, right? Now examples of few flavor, natural flavors. एक होता है अनीस. अनीस एक plant होता है. अनीस is nothing but the one plant, aromatic plant, obtained from Pimpinella umbelliferi. So family umbelliferi होता है उसका. Pimpinella anisum plant का नाम होता है Pimpinella anisum family umbelliferi. Now this is used as a flavoring agent in this concentration 300 ppm, right? Cinnamon bark. So Elateria, okay, cardamom, Elateria cardamom, इलायची, Elateria cardamom, इसको मराठी में इलायची बोलते हैं. Family Gingiberaceae. So it is used as a flavoring agent in the 5 to 50 ppm, right? Now wild cherry. So Prunus serotina, family Rosaceae. So it is used in the flavor as a flavoring agent in the 50 to 800 ppm concentration. लेमन, लेमन मतलब बस सीधा सीधा आपका नींबू होता है. सिट्रस लिमोनम, लिमो रोटेसी फैमिली. इट इज यूज्ड इन द concentration of 1000 to 10,000 ppm एज अ फ्लेवरिंग एजेंट. और बिटर ऑरेंज जो होता है, ऑरेंज में दो टाइप होता है, स्वीट ऑरेंज होता है, बिटर ऑरेंज, ऑरेंज मतलब संतरा. बिटर ऑरेंज सिट्रस aurantium family rotaceae. So it is used up to 500 ppm concentration. Sweet orange citrus sinensis family rotaceae, again the concentration varies. Now selection of flavor select कैसे करेंगे? It is based upon the compound to which flavor is added and what is the outcome. After adding the flavor, what is the outcome? Whether the flavor is written whatever it was as okay? जैसे आपने अगर कोई है ना ऑरेंज फ्लेवर डाला है, तो ऑरेंज फ्लेवर नॉर्मली कैसे स्मेल कर रहा है, बल्ब फ्लेवर कैसे स्मेल कर रहा है, उसके बाद में प्रोडक्ट में ऐड होने के बाद, मिक्स होने के बाद प्रोडक्ट कैसे स्मेल कर रहा है. सो बेस्ड अपॉन दैट, सो फ्लेवर्स वेल classified into three categories. First one is nothing but the impact flavor. So they will have an impact. What kind of impact? They will show most of the organoleptic properties of organoleptic potency, most of the organoleptic potency of flavor. Now if you add a lemon flavor to a particular product, and if the product is getting same flavor as that of the concentrated lemon flavor, then it is known as the impact compound. For example, methyl anthranilate conchromate grapes. Then second होता है contributory compounds. Contributory compounds. Now this increases the complexity and identity of named flavor. ये क्या करता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाता है and it increases the complexity. मतलब ओरिजिनल फ्लेवर के जैसे नहीं है, नॉर्मली फ्लेवर आएगा आपको, लेकिन कुछ कुछ उसके जैसे आएगा लेकिन कॉम्प्लेक्स आएगा. So there is a complexity is increased and identity of named flavor. But there is identity. अब वो समझ में आएगा ये ऑरेंज फ्लेवर है उसमें, लेकिन ऑरेंज के जैसा नहीं लग रहा है. इसमें क्या है कि ऑरेंज फ्लेवर है और एग्जैक्टली ऑरेंज के जैसे लग रहा है. सो इम्पैक्ट कंपाउंड, कॉन्ट्रीब्यूटिव कंपाउंड मीन्स ये ऑरेंज जैसे फ्लेवर तो आ रहा है लेकिन ऑरेंज जैसे लगना है, मतलब टेस्ट नहीं आ रहा है. सो इट इज अ कॉन्ट्रीब्यूटिव कंपाउंड. थर्ड वन इज अ डिफरेंशियल कंपाउंड्स. दे विल इम्पार्ट अ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक टू इंडिविजुअल फ्लेवर. ये थोड़ा सा वो ऐड करने के बाद चेंज ही हो जाएगा, अलग ही आपको फ्लेवर आएगा. एग्जाम्पल मिथाइल सैलिसिलेट, ग्लिसरीन, वेनिलीन, हनी, लेमन ऑयल.
they are known as a differential compounds. Okay, so flavoring agents, few examples, then compound, impact compound, contributory compound, and differential compound. Now next we'll see. Now for what kind of taste you have to use which type of flavor, इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं. So mostly these kind of taste are there, salty taste is there. So what kind of drugs will impart? So drug like for example sodium salicylate, ammonium chloride, ferric ammonium citrate. Drug like sodium salicylate, ammonium chloride, ferric ammonium citrate. So these kind of drugs they will have salty taste. ये जो drug है उनको salty taste होता है. Now this taste can be masked by cinnamon syrup. Cinnamon syrup is the best vehicle to mask this salty taste, right? Now along with, okay, other than cinnamon syrup, orange syrup is there, citric acid syrup is there, cherry syrup is there, coca syrup is there, wild cherry syrup, raspberry syrup, glyceride syrup. So they can mask salty taste, है ना. ये सब क्या करेंगे, salty taste को mask कर सकते हैं. Now bitter taste, it is masked by bitter taste. For example, most of the drugs they will have bitter taste. Example, anti-malarial drug they have a bitter taste. So it can be masked adequately by coca syrup, raspberry syrup, cherry syrup, cinnamon syrup, citric acid syrup, then licorice syrup, wild cherry syrup, orange syrup. It is mostly masked by coca syrup and raspberry syrup. And other syrups they can be used in descending order of their usefulness. So याद रखना है salty taste mask करने के लिए cinnamon syrup, bitter taste mask करने के लिए coca syrup और raspberry syrup. ठीक है. Sour taste और acrid taste जो था acidic taste that is blocked by जैसे raspberry syrup. Sour taste is masked by raspberry syrup and other fruit syrup. Other fruit syrup useful to mask the taste of hydrochloric acid. Now again acrid taste of capsicum is also masked by acacia syrup. Oily taste अगर है आपके फॉर्मुलेशन में, से फॉर एग्जांपल आपके फॉर्मुलेशन में है ना, जैसे मिनरल ऑयल है या फिर कोई फिक्स्ड ऑयल है, obviously you will get a oily taste. Cod liver oil है. So this cod liver oil taste can be masked by adding the wintergreen or peppermint or lemon or orange or anise oil. For a castor oil, you also can mask the taste by just emulsifying it with the equal volume of aromatic rhubarb syrup. So how to mask the taste? है ना, salty taste के लिए cinnamon syrup यूज करेंगे, bitter taste के लिए raspberry syrup, coca syrup यूज करेंगे, sour taste है तो उसको raspberry syrup यूज करेंगे, है ना, oily taste है तो उसको wintergreen और peppermint, बाकी ये यूज करेंगे. Because कभी-कभी इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि salty taste can be masked adequately by following. ठीक है, एक बार ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा है. commonly used sweetening agent. स्वीटनिंग एजेंट कौन कौन से यूज करते हैं, टैबलेट, कैप्सूल, सस्पेंशन और अदर फॉर्मुलेशन में. सो व्हाट आर द कॉमनली यूज्ड स्वीटनिंग एजेंट इन द फॉर्मुलेशंस. सो स्वीटनर एंड इट्स ब्रांड नेम. स्वीटनर क्या है, उसका ब्रांड नेम क्या है, अगर ब्रांड नेम है तो, whether it is a caloric or non-caloric. Now caloric means क्या है, so if compound is giving ATP, कैलोरीज बढ़ाता है वो, है ना, तो उसको कैलोरिक बोलते हैं. अगर नहीं कैलोरिक नहीं मतलब दैट इज नॉट मेटाबोलाइज्ड, वो कोई कैलोरिक नहीं है, सो नॉन कैलोरिक. कैलोरिक अगर है तो दैट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ डायबिटीज मेल्टस. ऑब्वियसली अगर इफ यू आर यूजिंग सुक्रोज एज अ स्वीटनर, अगर वो स्वीटनर सुक्रोज है और वो जिसको आप दे रहे हो पेशेंट डायबिटिक है तो उसको नहीं चलेगा ना, उसका लेवल बढ़ जाएगा शुगर. ऑब्वियसली that's why now it is included. Now sucrose is the most commonly used sweetener. And what is the sweetness index? Sweetness index क्या होता है सुक्रोज का? Sucrose has a sweetness index of 1. Remember, sucrose is given sweetness index or sweetness intensity of sucrose is known as 1. Now in comparison with the sucrose, all other sweetening agents they have given the sweetness number or sweetening intensity. ठीक है. Now sucrose is commonly used and it is known as a table sugar or cane sugar. क्या बोलते हैं इसको, टेबल शुगर, केन शुगर. इट इज अ डाइसैकेराइड है ना, डाइसैकेराइड होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होता है इसमें. सुक्रोज को ही इन्वर्ट शुगर बोलते हैं, सुक्रोज को ही अपन टेबल शुगर बोलते हैं, सुक्रोज को ही अपन केन शुगर बोलते हैं. इन्वर्ट शुगर के ऊपर क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर जीपैट 2023. नाउ सुक्रोज इज नोन एज अ सुक्रोज,
The intensity of sweetness index or sweetness intensity of sucrose is 1. Remember, am I audible to you? So remember, sucrose is a calorogenic and its sweetness index is 1 or sweetness intensity is 1, right? Fructose is nothing but the known as a fruit sugar, right? Fruit sugar known as a fructose is known as a fruit sugar, and it is also known as a लिवेलोज. तो फ्रुक्टोज को अपन लिवेलोज भी बोलते हैं. Why? Because if you check the optical rotation of glucose, so that is a dextro. Glucose का optical rotation जो होता है ना, वो dextro होता है. If you check the optical rotation of glucose, dextro, and if you check the optical rotation of fructose, it is levo. That's why fructose is also known as a लिवेलोज. लिवेलोज, लिवेलोज. Now fructose is a calorogenic. ये कैलोरी देता है, calorogenic है. And sweetness index of fructose is nothing but the 1.2. Sweetness index or sweetening intensity of fructose is a 1.2. So you can see sucrose का होता है 1, इसका क्या है 1.2. तो क्या है, fructose is little bit sweeter than sucrose. fructose थोड़ा सा ज़्यादा sweet होता है sucrose से, क्योंकि उसका sweetness ना, sucrose को sweetness index दिया है या sweetness number दिया है 1. तो उसके कंपैरिजन में बाकी शुगर का sweetness number देते हैं. अगर उससे ज़्यादा sweet है तो ज़्यादा नंबर आएगा उसका. So fructose is having 1.2. It is a rapid onset apparent sweetness. It gives rapid onset for apparent sweetness. Then third is nothing but the D-glucose. D-glucose is a calorogenic. D-glucose क्या होता है अपन dextrose. D-glucose is known as a dextrose. Why? Because if you check the optical rotation of glucose, it is a dextrose. That's why D-glucose is known as a dextrose and fructose is known as a livelose. Now D-glucose has a sweetness index of 0.5 to 0.9. अभी देखो इसका 0.5 to 0.9 है. सुक्रोज का कितना है 1. सो ये क्या है, उससे कम है. दैट्स व्हाई ग्लूकोज इज अ लेस स्वीट देन सुक्रोज. सुक्रोज ज्यादा स्वीट है ग्लूकोज. ग्लूकोज इज अ लेस स्वीट देन सुक्रोज, राइट? नाउ इट इज नोन एज अ डेक्सट्रोज, राइट? नाउ ये तो हो गया नेचुरल. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज आर्टिफिशियल स्वीटनेस. सो फर्स्ट वन इज नथिंग बट द एसिसल्फेम के. एसिसल्फेम के, इट इज अ नॉन कैलोरीजेनिक ना, ये डायबिटीज में चलता है. is used in the patient with diabetes also, because ये स्वीट टेस्ट तो देगा आपकी फॉर्मुलेशन को, बट उसका कैलोरी नहीं बढ़ाएगा, उसका शुगर नहीं बढ़ाएगा, राइट? सो एसिसल्फेम के नॉन कैलोरी, इसका ट्रेड नेम होता है, इसका ब्रांड नेम होता है सनसेट और स्वीट वन. इट इज अ 200 टाइम्स मोर स्वीटर देन सुक्रोज. सुक्रोज को अगर स्वीटनेस नंबर 1 है तो इसका 200 है. इट इज अ 200 टाइम्स मोर स्वीटर देन सुक्रोज. And it is a heat stable also. क्या है, एसिसल्फेम के, राइट? नेक्स्ट वन इज aspartame. Aspartame अगेन इट इज अ नॉन कैलोरीजेनिक. इसका ट्रेड नेम होता है न्यूट्रास्वीट एंड इक्वल. न्यूट्रास्वीट और इक्वल. इट इज अगेन 200 टाइम्स स्वीट देन सुक्रोज. इज अ 200 टाइम्स मोर स्वीटर देन सुक्रोज, क्योंकि इसका स्वीटनेस इंटेंसिटी होता है 200. अनस्टेबल इन द सॉल्यूशन, ये अनस्टेबल होता है सॉल्यूशन. नाउ सैकरिन, नेक्स्ट वन इज सैकरिन और सोडियम सैकरिन, अगेन नॉन कैलोरीजेनिक. इसका ट्रेड नेम क्या है, स्वीट एंड लो. ट्रेड नेम याद रखो, स्वीट एंड लो. इट इज अ 500 टाइम्स मोर स्वीटर देन सुक्रोज. इसके ऊपर GPAT 21 में क्वेश्चन आ चुका है. इट इज अ 500 टाइम्स मोर स्वीटर देन सुक्रोज. याद रखो 500 इसका इंटेंसिटी. ओनली प्लीजेंट आफ्टर टेस्ट. ओके, ओनली प्लीजेंट आफ्टर टेस्ट. बाद इनिशियली थोड़ा कड़वा लगता है, लेकिन बाद में स्वीट टेस्ट देता है सैकरिन. So only pleasant after taste. Now sodium cyclamate. Next one is the sodium cyclamate, which is also used as a sweetening agent. So it is a 30 times more sweeter than sucrose. So इसका sweetness intensity होता है 30. It is a carcinogenic. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. Sodium cyclamate is a carcinogenic. Sodium saccharin is also carcinogenic. Next, for example, sucrose. Sucrose इसका एक ये होता है, इसका ट्रेड नेम होता है Splenda. It is a 600 times more sweeter than native sucrose. Sucrose नहीं है, I think ये दूसरा नाम है. Sucralose है. Sucralose 600 times more sweeter than sucrose Splenda, and it is stable and stable over a broad pH range. Next होता है sorbitol. Sorbitol is having sweetness 0.6. It is very less sweeter than sucrose. It gives pleasant taste. These are the commonly used sweetening agent. तो आपको इसमें जैसे मैंने बोला है ट्रेड नेम है ना, ट्रेड नेम याद रखना है. ये ऐसा ट्रेड नेम, उसके बाद में उसका इंटेंसिटी. सुक्रोज का इंटेंसिटी होता है 1,
एसिसल्फाम के का 200, सैकरिन का 500, aspartame का 200, like this cyclamate का 330. You have to remember these things. They used to ask these things in the exam. Now next is nothing preservative used in the pharmaceuticals. Now what is the role of preservative? Why preservative are used? What are the preservative? These are the chemicals which will prevent the growth of microorganism, and they will prevent the microbial spoilage from microbial spoilage of your compound. Suppose you have some syrup, तो syrup आपको एक ही दिन में थोड़ी पीना है. So it will last up to 10 days, 20 days. So during that usage period or during that shelf life, during that life, so if there is a contamination, small contamination in the product, that it should not affect the therapeutic value of product. For that, you are using preservative. What are these? These are nothing but the chemicals. They will prevent the growth of microorganisms. They are used in the very less concentration. They are used in the minor concentration. So again, उसका ideal properties वगैरह आपको मालूम होगा. So it should be easily available. It should not have a harmful effect वगैरह वगैरह. But they used to ask you preservative their concentration. Okay, preservative and effective concentration. Route of administration मतलब एक किस dosage form के लिए use करते हैं. They are used for what kind of dosage form, and incompatibility if any. कोई incompatibility है तो first one is nothing but the benzalkonium chloride. So this is the most commonly used in the injectables. Benzalkonium chloride. Ketonic होता है ये. So it is used in the 0.02 concentration. Weight by. Remember benzalkonium chloride is 0.002%. 0.02%. So it is used as a preservative in intramuscular injection, inhalation, solution, topical and ophthalmic products. Benzalkonium chloride क्या होता है? It is incompatible with the citrate and methyl cellulose. अगर methyl cellulose है फॉर्मुलेशन में citric acid है तो ये benzalkonium chloride incompatible है, citrate के साथ में salt बना देगा. Right? Next one is nothing but the benzothionium benzthionium chloride. It is used in the concentration of 0.01% for the intramuscular, intravenous, ophthalmic and OTT मतलब ear drops के लिए. It is an anionic surfactant. Is benzethonium chloride. Next होता है benzoic acid. Benzoic acid is used for oral also. Benzoic acid is used as a preservative in 0.1 to 0.3%. Now it is used as a preservative for intramuscular, intravenous irrigation solution, oral, rectal, topical and vaginal preparations. It is incompatible with the alkalis, heavy metals and kaolin. Now next to the benzyl alcohol. So it is used in the concentration of 0.75 to 10% in the injections, topical preparations, oral and vaginal preparations. So it is incompatible with the oxidizing agent. It is incompatible with the oxidizing agents, non-ionic surfactants and methyl cellulose. It is incompatible. Cetrimide is a cationic surfactant. You know that cationic surfactant होता है cetrimide. It is used as a preservative in 0.01 to 0.02% in the topical and intradermal formulation, intramuscular and subcutaneous injections. So it is incompatible with the ionic, non-ionic surfactants and metals. Next होता है butyl paraben. So it is used in the concentration of 0.0001 to 0.02 in the injections, oral, rectal and topical tablets. So topical formulations, syrups only. So it is a it is incompatible with the non-ionic surfactants and some plastics. Ethyl paraben again 0.001 to 0.2%. It is concentration used in the topical and oral formulation as a preservative. Again, it is incompatible with the non-ionic surfactant and plastic and silica. Methyl paraben. Butyl paraben, ethyl paraben, methyl paraben. Right. So methyl paraben is used in this concentration 0.05 to 0.18 for the intramuscular, intravenous, subcutaneous, ophthalmic, oral, rectal, topical, vaginal formulations. It is again incompatible with the sorbitol, some plastic and non-ionic surfactant. Preservative का भी एक चार्ट आपको मिलेगा. You will find this chart in the Lachman also. There are a lot of preservative described over there. But सभी important नहीं है तो इसलिए मुझे जो लगता है कि ये important है उतना लिया है मैंने. So there is a one chart in the Lachman, okay? तो उसमें बहुत सारे दिए हैं. So again you can see over here
So phenol is also used as a preservative in the concentration of 0.02, so 0.2 to 0.5 in the injections. It is incompatible with the albumin and gelatin. Cresol is used as a preservative in 0.1 to 0.35% in topical and transdermal intramuscular intravenous injections. Again, incompatible with the non-ionic surfactants. Chlorocresol. Chlorocresol is used as a preservative in 0.05 to 0.1% in a topical formulation. It is incompatible with some plastic, rubber, methyl cellulose, and it is also incompatible with the non-ionic surfactants. तो फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट, it is used as a preservative in the ophthalmic preparation like eye drops and etc. in the 0.001% concentration. It is used in a topical and ophthalmic and intramuscular injection. So it is incompatible with the incompatible with the halides and amino acids and some plastic and rubber. Sodium benzoate used in the concentration of 0.1 to 0.3% in the intramuscular, intravenous, dermal, rectal, topical, oral preparation. याद रखना है, it is incompatible. ये incompatibility भी दिया है यहाँ पे, but concentration important है आपके लिए, concentration याद रखना है. Okay. So I have extracted few important preservatives, but if you want to read all preservative, you can go and read in the lecture. Okay. Now next one is antioxidant. Again, antioxidant. What are the antioxidants? These are the compounds which will prevent the oxidation of your product. So am I audible to you? Audible आएगा? No, oxidation क्यों होगा product में? Why oxidation will be there? So due to जैसे अपने आपके पास एक syrup है. So if you have been prescribed with some kind of syrup, आप क्या करते हो? Open करते हो, 5 ml लेते हो जो भी dose दिया है. Whatever dose is prescribed, you used to take and you have to then you used to close that. So during that opening and measuring dose, taking the dose and closing, in between that some air may go in the product. Now due to that there might be oxidation, air oxidation. So if you place your syrup in the light, so light may cause deterioration of product by oxidation, photooxidation. If there is generation of free radicals in the product, that may affect the that may cause deterioration of your product, or it may affect the therapeutic value of product. So that's why you have to use antioxidant in the preparation. Right. Now antioxidants, they prevent the oxidation. Now, what is oxidation? Loss of electron from compound. If there is a loss of electron from compound, which leads to change in the oxidation state of the molecule. Now most of the oxidation is because of the free radicals. Free radicals are oxygen or metal ions. Most of the oxidation जो होता है product में, that is because of the free radicals or oxygen or because of the metal ions. So antioxidants, they are the compounds which are used to prevent the oxidation of your product. So oxidation means loss of electron from the compound, and which leads to change in the oxidation state of that molecule because of oxidation is because of the free radicals, metal ions, oxygen, etc. etc. Antioxidants, they prevent the oxidation. Okay. Antioxidants are the substance which prevent the oxidation. Antioxidants, they are classified into three types. Two antioxidants, reducing agents, antioxidants, synergist. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है ट्रू एंटीऑक्सीडेंट, रिड्यूसिंग एजेंट एंड एंटीऑक्सीडेंट सिनर्जिस्ट. तीन क्लासेस होते हैं एंटीऑक्सीडेंट की, कैसे एक्ट करता है. नाउ व्हाट डू मीन बाय ट्रू एंटीऑक्सीडेंट? ट्रू एंटीऑक्सीडेंट्स, दे एक्ट्स बाय चेन टर्मिनेशन मैकेनिज्म. Okay, they will true antioxidants will react with the free radical present in the formulation, and they will prevent the chain of oxidation. They will bind to a free radical, they will scavenge a free, they are known as a free radical scavengers. For example, उसका एग्जांपल होता है ट्रू एंटीऑक्सीडेंट का एग्जांपल देखो. BHT मतलब क्या? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन. और BHA मतलब क्या? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल. ठीक है, BHA. These are the true antioxidants. Now second one is the reducing agents. Now what they do? They are water soluble. True antioxidants, they are water insoluble. Both BHA and BHT both are
antioxidants, true antioxidants, what are insoluble. फिर reducing agent क्या होता है? So they act as a reducing agent. Okay, they themselves get oxidized instead of प्रोडक्ट. प्रोडक्ट के बजाय वो खुद ऑक्सीडेशन का शिकार बन जाते हैं. जैसे बाउंसर्स होते हैं आपके साथ में. बाउंसर का काम क्या है? किसी ने अगर सामने से पेड़ में से थप्पड़ मारने की ट्राई किया तो नेता बच जाए, बाउंसर को भले ही थप्पड़ लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता. लाइक दिस रिड्यूसिंग एजेंट. Reducing agent, they act as a they act by getting oxidized in place of drugs. They are having, okay, all these reducing agents, they are having lower redox potential than drug. That's why they preferentially gets oxidized. आपका जो ड्रग है उसका जो रिडॉक्स पोटेंशियल है उसका रिडॉक्स पोटेंशियल हायर होता है, ज़्यादा होता है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसका रिडॉक्स पोटेंशियल कम होता है. उसके कारण क्या होता है कि रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन होता है, आपका ड्रग बच जाता है. तो एग्जांपल क्या है उसका? विटामिन सी और एस्कॉर्बिक एसिड. सो रिड्यूसिंग एजेंट विटामिन सी और एस्कॉर्बिक एसिड बहुत सारे यस सोडियम थायोसाइड. So antioxidants, they will prevent the oxidation of your product. They are classified into three types. True antioxidants. So they are known as the active scavengers. There are most of them are water insoluble. They terminate the chain of oxidation reaction by binding to a free radical. They are known as the free radical scavengers. Example is a butylate hydrostyrene. Reducing agents. So they have lower redox potential than your drug of interest, and that's why they are preferentially get oxidized in place of your drug, and they are water soluble. Example is nothing but the ascorbic acid or vitamin C. Third type का antioxidant होता है antioxidants. They are known as antioxidant synergist. उसके साथ में काम करने वाले, उसका हेल्प करें हम. They are also known as chilling agents. So increasing the effect of antioxidants, they increases the effect of antioxidants. Example होता है EDTA, chelating agent. So what it will do? It will chelate the metals, because metal cation जो है they are also responsible for the oxidation. So chelating agents, they chelate, they will form chemical bonding with the metal lines. So commonly used antioxidant for aqueous system ना. अगर सिरप है वाटर सिस्टम में, उसके लिए कौन से कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स हैं? So for example, sodium sulfide, sodium sulfate, sodium sulfide, sodium sulfate, sodium bisulfate, sodium thiosulfate, sodium metabisulfate, sulfate and phyte, phyte and phyte, ये सब क्या है? एंटीऑक्सीडेंट. सोडियम, ओके, सोडियम फॉर्माल्डिहाइड इन सल्फोक्सिलेट, सोडियम फॉर्माल्डिहाइड, सल्फोक्सिलेट, सल्फर डाइऑक्साइड, they are also antioxidants. For aqueous only, your ascorbic acid, isoascorbic acid, thioglycerol, thioglycolic acid, okay, then cysteine, hydrochloride, then acetylcysteine, all they are used as an antioxidant for aqueous. Now for oily system, अगर oil है उसमें, for oily system, again ascorbyl palmitate, ascorbic acid का इस तरह है. Hydroxyquinone, propyl gallate, hydroxyquinone, propyl gallate, then okay, then nordihydroguaridic acid, इसमें BHT, butylated hydroxytoluene, and BHA, butylated hydroxyanisole, alpha tocopherol and lecithins. They are used as antioxidant for oily skin. देखो अभी रिसेंटली ही GPAT 2020 में इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. Ascorbic acid is used as an antioxidant in the pharmaceuticals. It acts by following mechanism. और मैकेनिज्म कौन सा था? ऑप्शन था एक, by chain termination mechanism, by enhancing the effect of antioxidants, and then by getting oxidized preferentially in place of drug. ऐसे ऑप्शन थे, तो दैट वाज द आंसर. इसके ऊपर भी क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं. Some commonly used diluents and their marketed product. जो diluent some commonly used diluents and their marketed products. So commonly used diluent होता है एक माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज. माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, तो उसके मार्केटेड नेम्स क्या है, प्रोप्राइटरी नेम्स क्या है, ट्रेड नेम्स क्या है, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. तो एक क्वेश्चन डायरेक्टली आ चुका है, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज इज आल्सो नोन एज एवी सेल. इसके ऊपर एक बार ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, आई थिंक 2-3 बार आ चुका. माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज इज आल्सो नोन एज एवी सेल. इसकी ग्रेड्स होते हैं PH102
105302 इंक्रीज होते pH है ना, pH 102 105 pH 1 ना 101 भी होता है, अपन देखा है, one is present in sugar granule, one is a powder. Then lactose, again lactose is the most commonly used as a diluent. Lactose इसका direct tableting lactose. And lactose 310, lactose 316 fast flow. इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, fast flow is a brand name or trade name for following diluent. Lactose fast flow, उसका नाम डायबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट, इट इज इनऑर्गेनिक, याद रखना है, इनऑर्गेनिक डाइल्यूएंट है, इसका ट्रेड नेम होता है इनकम्प्रेस, इनकम्प्रेस है ना, सीडी, सीडी मतलब कैल्शियम फॉस्फेट होता है, डायबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट सीडी, देन अनहाइड्रस ए टैप, अनहाइड्रस ए टैप ट्रेड नेम फॉर डायबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट. देन मेंटोल होता है, अगेन कॉमनली यूज्ड डाइल्यूएंट, तो उसका ट्रेड नेम डीमाइनेटॉल, मैनोजेम, then Manogem 2080. These are the trade names. ये याद रखना है. Some modified excipient and modification process. तो ये जो additives है, ये जो diluent है, so they will not have always all the qualities required for the product. So whatever quality of diluent you need, so it is not fulfilled by any single diluent. So you have to modify that diluent for particular process. कि पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है आपका, तो उसके हिसाब से डाइल्यूएंट को आपको मॉडिफाई करना पड़ता है. सो इंस्टेड ऑफ डूइंग these things, ready-made modified diluents are also available. So some modified excipient and their modification process. तो modified excipient कौन से है, उसका modification process कौन सा है. So यहाँ पे देखो पहला है examples. So incompress that is a for dicalcium phosphate, dibasic calcium phosphate. Imocell, diatab, avicell, flow lactopress, pharmatose, xylitap, maltrin, paratecium, dipac, advantose, monogem, carbapol 71G. These are nothing but some modified excipient. Now why they are modified? They are modified for the particle size, modification of particle size distribution via milling and sieving, agglomerating or roller compacting. So they are modified for this process. Again you can see over here, AV cell, Ceolus, Emocell, ये क्या है, ट्रेड नेम है डाइल्यूएंट के, क्या है अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. They are modified diluents, they are modified excipient. Why they are modified? Because they are modified to get isolation in the crystalline portion of cellulose fiber, isolation of crystalline portion of cellulose fiber. सब क्या है, cellulose derivative है तीन. Now for example dipac, then mdex, lactose anhydrase beta, lactose monohydrate and glucose monohydrate. They are also modified for co-crystallization, selection of particular crystal and polymorphic form. They are modified for this process, co-crystallization, selection of particular crystal for in particular crystal form or polymeric form. Now again you can see AV cell, pH 103, 112, 113, starch 1500 LM, Emocell LM50, XLM 90. So they are modified to reduce the moisture content, drying. They are modified for drying to reduce the moisture content. So these are the some modified excipient. तो excipient जो already है उनको modify किया है. क्यों करना है भाई, कुछ काम नहीं, इसलिए modify क्यों करना है, क्योंकि प्रोसेस में चेंज आ रहा है, प्रोसेस में ये डिजायर्ड लगा है. जैसे मान लीजिए कि आपको सेलुलोज में 5% मॉइस्चर चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए. तो जो सेलुलोज है उसका मॉइस्चर कंटेंट है 10%. ऑब्वियसली उसके कारण दिक्कत आ रहा है, तो आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसको आपको ड्राई करना पड़ेगा. दैट्स व्हाई मॉडिफाइड एक्सपेंट एग्जांपल्स एंड मॉडिफिकेशन प्रोसेस. मॉडिफाई क्या किया है भाई, क्यों किया है, क्या किया है, अपन देखेंगे. Next one is nothing but we'll see next part. Some list of some marketed co-processed excipient. Co-processed excipient.
को मतलब साथ में प्रोसेस करना है, साथ में प्रोसेस करने वाले एक्सपेंड. So sometimes you need a 2 or 3 expand. Nowadays they are ready made. So nowadays they are ready made. So for example, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है लूडी प्रेस. ट्रेड नेम इज नथिंग बट लूडी प्रेस. लूडी प्रेस ट्रेड नेम है. इसमें क्या होता है? So it is co processed expand of lactose monohydrate. लैक्टोज मोनोहाइड्रेट 93% होता है, कोलिडोन 30% and 3.5%, sorry, कोलिडोन 30 3.5% and कोलिडोन Cl 3.5%. So ludipres is a combination of lactose monohydrate 93%, कोलिडोन 30 3.5% and कोलिडोन Cl 3.5%. अब एडवांटेजेस, इसके एडवांटेज क्या है? एडेड एडवांटेज. ludipres मतलब क्या है कि पहले लैक्टोज मोनोहाइड्रेट अलग से यूज करते थे, अलग क्वांटिटी में, कोलिडोन यूज करते थे अलग क्वांटिटी में, बाद में कोलिडोन सीएल आपको अलग क्वांटिटी में यूज करना पड़ता था, है ना. और उसमें क्या है, हाइग्रोस्कोपी का इशू हो जाता था. लुडिप्रेस ट्रेड नेम, और एक कंपनी ने क्या किया, देयर इज वन कंपनी हु हैव को प्रोसेस्ड एक्सपेंट. तो ये तीनों एक में डाल दिया उसने, और एक तीनों डाल के रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन के साथ में उन्होंने रिलीज किया लुडिप्रेस. सो इट विल हैव लोअर हाइग्रोस्कोपिसिटी, गुड फ्लोएबिलिटी, टैबलेट हार्डनेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ मशीन. मशीन के स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता टैबलेट हार्डनेस. लुडिप्रेस, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. लुडिप्रेस क्या है? लैक्टोज मोनोहाइड्रेट 93%, कोलिडोन 30 3.5% एंड कोलिडोन Cl देन 2.3%, सॉरी 3.5%. याद रखना है लुडिप्रेस में क्या है, लैक्टोज मोनोहाइड्रेट 93%, कोलिडोन 30 3.5%, कोलिडोन Cl 3.5%. दूसरा होता है सेलेटोज 18. सेलेटोज 80 अगेन ट्रेड नेम क्या है? सेलेटोज 80 को प्रोसेस्ड पॉलीमर है, कंस्ट ऑफ अल्फा लैक्टोज मोनोहाइड्रेट 75% एंड सेलुलोज पाउडर 25%. तो इसमें लैक्टोज प्लस सेलुलोज पाउडर. सेलेक्टोज नाम में रखो, सेला CE फॉर सेलुलोज, लैक्टोज, सेलेक्टोज 80, सेलेक्टोज 80. So it is a co-processed polymer of lactose and cellulose. Okay. So added advantage, साथ में कंबाइन करके जो मिला है उसमें और एडवांटेज के मिला है. So that is nothing but the, now this combination is highly compressible, good mouth feel is there and better tableting at a low cost. Now next is nothing but the Starlac. नाम में रखा है ना, नाम में आप बोलते हो नाम में क्या रखा है, सब नाम में रखा है. स्टारलैक. स्टारलैक में क्या क्या दिखता है आपको? स्टार मतलब स्टार्च, लैक मतलब लैक्टोज, सी मतलब सेलुलोज एंड लैक्टोज मींस लैक्टोज सिंपली. लुडिप्रेस, लुडी कोलिडोन में लुडी कोलिडोन लुडी के जैसे प्रोनाउंस होता है, लैक्टोज यानी कोलिडोन. स्टारलैक में आएगा अल्फा लैक्टोज मोनोहाइड्रेट 85% एंड बाद में मेज स्टार्च जो है वो 15%. सो स्टारलैक में अल्फा लैक्टोज मोनोहाइड्रेट 85% and 15% maize starch. Now combination of these two, they will offer good flow, optimized disintegration process and excellent tablet hardness. Now Pharmatose DCL 14, Pharmatose and DCL 14. So इसमें क्या है, अनहाइड्रस लैक्टोज 95% एंड lactitol plus lactose 95% lactose is there. Lactitol is nothing but reduced pump lactose, so 5%. So again highly compatibility this formulation and super flowing property. Low lubricant sensitivity. New co-processed expand is AVCell CE15. इसमें क्या AVCell, AVCell मतलब माइक्रोस्टाइन सेलुलोज, C वो किसके लिए? गवर गम माइक्रोस्टाइन सेलुलोज प्लस गवर गम. So less grittiness is there, reduced tooth packing, minimal chalkiness in the creamier mouthfeel, improved overall palatability. ये co-process साथ में ही दिए हैं इनको. Then Vitacell VE 650, Vitacell CEP 650. सेल मतलब सेलुलोज आ गया, माइक्रोस्टाइन सेलुलोज 65% एंड कैल्शियम कार्बोनेट 35%.
बेटा सेल में क्या है, माइक्रोस्ट्रेन सेल्यूलोज एंड कैल्शियम कार्बोनेट। डायरेक्ट कंप्रेशन एंड इनकैप्सुलेशन के लिए एडवांटेजेस है। नाउ फॉर्मामैक्स, फॉर्मैक्स फॉर्मैक्स एक्स फॉर्मैक्स एक्स मैक्स एक्स और कैल्शियम कार्बोनेट 70%, कैल्शियम कार्बोनेट 70, कैल्शियम कार्बोनेट 70% एंड सॉर्बिटॉल 30%। इसमें क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट 70%, सॉर्बिटॉल 30%। क्या एडवांटेजेस क्या है उसका, दोनों को ऐड होने के बाद, हाई कंप्रेसिबिलिटी, एक्सलेंट टेस्ट मास्किंग, फ्री फ्लोइंग, सुपीरियर कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, कंट्रोल्ड पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट होता है डायपैक। डायपैक क्या है, इट इज नथिंग बट द सुक्रोज 97% एंड डेक्सट्रिन 3%। अगेन डायरेक्टली कंप्रेसिबल होता है ये एंड लो हाइग्रोस्कोपिक होता है। सो दे मे आस्क यू क्वेश्चन लाइक दिस, है ना। ludipres is a co-processed excipient consist of following। ludipres में क्या क्या होता है याद रखना है आपको। ludipres में होता है लैक्टोज मोनोहाइड्रेट, केओलिन, लैक्टोज मोनोहाइड्रेट, कोलिडोन 30 एंड कोलिडोन Cl। लैक्टोज मोनोहाइड्रेट 93%, कोलिडोन 30 एंड कोलिडोन Cl 3.5% रिस्पेक्टिवली। सेलेटोज में क्या होता है, यहाँ पे अल्फा लैक्टोज मोनोहाइड्रेट 70%, 75% एंड बाकी सेलुलोज पाउडर 25%। स्टार लैक में है स्टार्च प्लस लैक्टोज, अल्फा लैक्टोज मोनोहाइड्रेट 85% एंड देन मेज स्टार्च 15%। फर्मेटोज, इसमें अनहाइड्रस लैक्टोज एंड लैक्टिटॉल। एविसेल CE15 माइक्रोस्ट्रेन सेलुलोज प्लस गवर्गम। Vitacell C VE650 माइक्रोस्ट्रेन सेलुलोज 65% एंड कैल्शियम कार्बोनेट 35%। Pharmax X कैल्शियम कार्बोनेट 70% एंड सोर्बिटॉल 30%। डायपैक में क्या होता है, सुक्रोज 95% होता है, डेक्सट्रिन 3% होता है। आर यू गेटिंग और नॉट, समझ रहे हैं आपको, आर यू गेटिंग और नॉट, यस और नो। ये आपको बोला है आपके कॉलेज में किसी ने, या फिर किसी ने यूट्यूब के ऊपर बोला है, ये सब बोल ही नहीं सकते, नहीं है वो कंटेंट है ही नहीं अवेलेबल। अगर आए तो मुझे लिंक भेजो, बोलेंगे आप, उनको भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज एडवेंटोज एफ एस 95% फ्रुक्टोज। एडवेंटोज एफ एस एक ट्रेड नेम है को प्रोसेस्ड एक्सप्लेट का, इसमें फ्रुक्टोज 95% है, स्टार्च 5% है। एडवांटेज क्या है इसका, एक्सलेंट फ्लो, गुड कंप्रेसिबिलिटी ऑफ टैबलेट, होल्ड 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 नहीं होल्ड शेप वेल बट आर वेरी चेबल। कैप्टिसोल, कैप्टिसोल में मॉडिफाइड साइक्लोडेक्स्ट्रिन होता है, न्यू केमिकल एंटिटी है साइक्लोडेक्स्ट्रिन। इम्प्रूव्ड वाटर सोलिबिलिटी, इम्प्रूव्ड वाटर इम्प्रूव्ड सल्फोब्यूटिल ईथर बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन सोलिबिलिटी, इसका सोलिबिलिटी बढ़ जाता है। कोलिडोन CLM, कोलिडोन CL एंड कोलिडोन CLM क्रॉस लिंक्ड वाटर इंसोल्युबल पॉलीविनाइल पाइरोलिडोन, कोलिडोन आ गया तो उसमें पायरोविनाइल पॉलीडोन होता है, ओके, पॉलीविनाइल पाइरोलिडोन आता है इसमें। They are modified, size is modified according to the application for disintegration and solubility enhancement। xylitol, xylitol 100 में xylitol होता है एंड polydextrose होता है, directly compressible with improved mouthfeel। Udrigit RL and RAS and lustre clear, इसका ब्रांड होता है lustre clear। यह methylic acid polymer with macrocycline cellulose and carrageenan, modified for sustained release tablet, efficient tablet coating with a short hydration and prior to the coating and fast drying time, ये उसका एडवांटेज है। सो ये सब आपको याद रखना है कि क्या क्या है उसमें। These are the some few co-processed co-processed excipient। नेक्स्ट होता है टॉक्सिटी ऑफ कॉमनली यूज्ड एक्सपेंट। ऐसा नहीं कि सिर्फ ड्रग टॉक्सिटी करता है, इवन आपके एक्सिपिएंट यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन दे आल्सो हैव सम टॉक्सिटी इश्यूज। सो टॉक्सिसिटी ऑफ कॉमनली यूज्ड एक्सिपिएंट, तो जो एक्सिपिएंट यूज कर रहे हैं आप, जैसे टाल्को यूज कर रहे हैं, टाल्को क्या क्या आपको लगता है कि टाल का क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, लेकिन टाल का भी टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट है। आपको लगता है कि वी आर यूजिंग सनसेट येलो और टार्ट्राजिन कलर इन द टैबलेट ना, अच्छा दिखने के लिए बहुत सारे कलरिंग टैबलेट होते हैं, बट उसका भी एडवर्स इफेक्ट होता है आपकी बॉडी के ऊपर। नो,
So toxicity of some commonly used excipient. Information of toxicity on a commonly used experiment. Right. So information of excipient toxicity. It is given in the Food Chemical Codex. Food Chemical Codex (FCC). Okay. So information related to this it is given in the Food Chemical Codex (FCC). Then again also given in the Code for Federal Regulation, that is CFR. FDA Inactive Ingredient Guide, also given in the FDA Inactive Ingredients Guide. FDA Inactive Ingredient Guide. Then it is also mentioned in the 21 CFR Part 1 to 184. Now 21 CFR 21 Code for Federal Regulation Part 180 to 184 of US FDA. They have given the list of okay, list list of experiment which are known as generally regarded as a safe. कौन से एक्सपेरिमेंट सेफ है जनरली रिगार्डेड एज अ सेफ लिस्ट जनरली रिगार्डेड एज अ सेफ उसका लिस्ट किस में दिया है 21 सेफ और पार्ट 180 टू 184 इसमें एक लिस्ट दिया है एक्सपेरिमेंट का तो उनको बोलते हैं जनरली रिगार्डेड एज अ सेफ मतलब वो सेफ है नो एक्सिपिएंट एंड देयर टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट सो पहले कार्बोलेटेड वैसलीन अगर वैसलीन है कार्बोलेटेड वैसलीन सो इट इज अ टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है इरिटेंट होता है ये डर्मेटाइटिस कॉज कर सकता है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कॉज कर सकता है प्रोपिलीन ग्लाइकॉल पीजी कैन कॉज मिथेमोग्लोबिनेमिया इन सेंसिटाइजेशन एंड प्रोराइटिस थायोमर्सल जो होता है ये कर सकता है हाइपरसेंसिटिविटी एंड मर्क्यूरियल टॉक्सिसिटी aluminum salts if they are used as excipient they can cause local tissue reaction at a site of injection or at a site of dose in dogs and guinea pigs. You know, in chlorobutanol it can drop the pressure drop करता है CNS effect भी है इसको and it can cause somnolence sunset yellow or tartarize in color it can cause urticaria. You know, it can increase the headache, exacerbate the headache. It can exacerbate the asthma. GIT disturbances are there. It is very dangerous when it is very dangerous in patient with aspirin intolerance. अगर किसी को एस्पिरिन का इंटॉलरेंस है उसमें अगर सनसेट येलो का अगर कुछ टैबलेट या फिर कुछ है so that will be dangerous. Again, low molecular weight polyethylene glycol. It is a teratogenic in the mouse. मैनिटोल जो है मैनिटोल के बारे में याद रखना है. It is most commonly used diluent in the chewable formulation. So inducer for renal and cardiac injury and apoptosis in the kidney and heart of mice. You know, मैनिटोल भी ये करता है. Parabens, methyl paraben, propyl paraben, they are used as a preservative. So they can cause hypersensitivity reaction. These antioxidants BHA and BHT, butylated hydroxytoluene and butylated hydroxyanidrol, and so they can cause liver toxicity in the animals. Neurons, they can cause cardiac arrest, cardiac effect at a high dose, and sudden death may result. Talc is most widely used diluent and it can cause lung tumor in the female rats and adrenal gland tumor in the male rats. तो टाल्क भी खतरनाक हो सकता है एनिमल में पाया है हेलो हेलोटेन कैन कॉज ब्रैडिकार्डिया कार्डियक arrhythmia in the dogs. Limonene can cause hyaline droplet formation in male rat kidney. Saccharin used as a sweetener sodium saccharin. So it can cause proliferative changes in the male rat bladder. Proliferative changes मतलब कैंसर करेगा ये क्या कैंसर. It can cause bladder cancer in the rat. So these are the some toxicological effect of some commonly used excipient. The excipient भी safe नहीं है. There is nothing safe in the. Are you getting or not? Are you getting or not? Commonly used buffer. Commonly used buffering agents. Buffer मतलब क्या होता है? Buffer is it is nothing but the buffer is nothing but the it is a combination of weak acid and its salt with the base. So weak acid and its salt, weak base and its salt. So buffer is a solution
that will register change in the pH upon addition of strong acid or strong base in a small amount. So buffer solution is nothing but the solution which will resist the pH change upon addition of small amount of acid or base, right? So buffer, why they are used? Because they are used in the formulation to maintain the pH, adequate pH. So some drugs they are active only, or they are intact, they will remain intact at a particular pH. pH change होगा तो उनका catalyst हो सकता है. So that's why buffer you are using. So acetate buffer is there. So example of marketed products, acetate buffer is named marketed under Neopogen and Neolasta. Neopogen, Neolasta, a brand name is. Succinate buffer is there. So Actimum, citrate buffer is there. Humira, histidine buffer is there. Xyler, Zolair, phosphate buffer is there. Embrel, trees buffer is there. Trees buffer is known as a leucine. Leucine, leucine. Now excipient used in the vaccine. वैक्सीन में भी एक्सपेंट यूज करते हैं. से ये वैक्सीन है, थ्रैक्स वैक्सीन है, उसका ब्रांड नेम है बायोथ्रैक्स. इसमें कौन से एक्सपेंट यूज करते हैं? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमीनो एसिड्स, बेंजीथोनियम क्लोराइड, फॉर्माल्डिहाइड, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड शुगर एंड विटामिन्स. तो ये वैक्सीन में भी एडिटिव्स यूज करते हैं, राइट. देन फ्यू एग्जांपल मैंने दिए, बाकी बहुत सारे यू कैन गो एंड चेक. दूसरा वैक्सीन आता है डी टैप का, ब्रांड नेम है डी टैप सेल. इसमें एल्यूमिनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियमोनिक एसिड, डाइमिथाइल बीटा साइक्लोस्टीन, फॉर्मेलिन, ग्लूटालेट, ऑक्सीफेनॉल, ऑक्सीफेनॉक्सी इथेनॉल. और these vaccine consists of either antigen or है ना, most of the it consists of antigen or antibody, है ना. वैक्सीन में तो एंटीजन होता है, एंटीबॉडीज तो सीरम में होता है, रेडीमेड एंटीबॉडीज. वैक्सीन में एंटीजन होता है ना. एंटीजन में भी इधर it is a part of bacterial cell, so it may be lipopolysaccharide, it may be a protein, it may be a fraction of protein, it may be something, it may be fraction of nucleic acid. So vaccine consists of antigen. Now antigen is adds up on these additives, in the vaccine. तो एडिटिव्स कौन से यूज करेंगे, एक्सपेंट कौन से यूज करेंगे, तो ये है. सो डी टैप ट्राइपेडी है, डी टैप ट्राइपेडी है. इसमें क्या है? एल्यूमिनियम पोटेशियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, बोवाइन एक्सट्रैक्ट, फॉर्मेलिन, पॉलीसॉर्बेट 80, सोडियम फॉस्फेट एंड थायोमर्सल. बीसीजी वैक्सीन जो होता है आपका, सो बीसीजी वैक्सीन इज asparagine is used, citric acid, lactose, glycerin, iron, ammonium citrate, magnesium sulfate, potassium phosphate. They are used as excipient. D-tap infantix. So aluminum hydroxide, bovine extract, formalin, 2-phenoxyethanol, polysorbate. D-tap HIP, D-tap HIP or tri-HIP उसका नेम है. In this aluminum potassium sulfate, aluminum sulfate, bovine extract, ये additives है. So if you want to read all the vaccines, you can go and read from Lakman, page number 1, page number 879. तो ठीक है, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए आपको. वैक्सीन में भी ये एक्सिपेंट यूज करते हैं, क्योंकि वैक्सीन में क्या होता है, वैक्सीन इज नथिंग बट हैविंग एंटीजन. इट मे बी आइदर लिपोपॉलीसैकेराइड, it may be either protein, it may be either some nucleic acid part, it may be either some antigenic portion of bacteria, so which is adsorbed or it is attached to a excipient, right? Attached to a excipient. Excipient residue in common, excipient residue in some common excipient. तो excipient जो है ना, उसका रेसिड्यू बच जाए तो वो रेसिड्यू भी एडवर्सली इफेक्ट कर सकता है. So excipient prepared by fermentation should be controlled for endotoxin. तो जो भी excipient है, जैसे maltose, dextrin, so they are prepared by fermentation process. So excipient prepared by fermentation process should be controlled for endotoxin. Fermentation मतलब bacteria के using it, by using bacteria only fermentation is done. So there might be some endotoxin, okay, that might be remaining in the
fermented product. Now that may affect the patient adversely. So excipient prepared by fermentation should be controlled for endotoxin levels. So mycotoxins, एक होता है mycotoxin. That is a endotoxin from fungus. Mycotoxin from fungus known as a Saturn fungus. It is highly toxic. Okay. जैसे lanolin wool fat यूज करते हैं as a excipient. Lanolin and wool fat may contain low level of insecticide, है ना. जैसे जो भेड़ बकरियां हैं, लैनोलिन कहाँ से आता है, उनसे आता है, भेड़ बकरी से. तो उनको ना कोई इन्फेक्शन हो इसलिए, है ना, उसमें इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, जैसे टिक एंड माइस उनको अटैच ना हो जाए इसलिए, है ना. तो सम traces of this insecticide may be present in the lanolin and wool plant, which may not affect seriously, but they will not cause any direct toxicity, but they can cause allergic reaction as well. So when they are used in the cosmetics, so again heavy metal limit for nickel not more than 1 ppm as per the European Pharmacopoeia in the excipient. European Pharmacopoeia बोला कि heavy metal के लिए भी लिमिट डाल के रखेंगे. Heavy metal limit for nickel not more than 1 ppm as per the European Pharmacopoeia. यहाँ पे सब मैंने एक्सटेंड करके रखा है. ये यही पॉइंट बुक में पढ़ने जाओगे तो कम से कम 4 पेज होगा. एक्सिपिएंट क्या है यहाँ पे लिखा है, लैक्टोज. लैक्टोज में क्या क्या हो सकता है रेसिड्यू, तो एड एंड रिड्यूसिंग शुगर, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल, मैग्नीशियम स्टीरेट, इसमें क्या क्या हो सकता है रेसिड्यू, aldehyde, peroxide, organic acids and antioxidants का रेसिड्यू हो सकता है. They can cause a hypersensitivity reaction, they can cause allergic reaction etc. स्टीयरेट लुब्रिकेंट, मैग्नीशियम स्टीयरेट लुब्रिकेंट जो होता है उसमें क्या रह सकता है, अल्कलाइन रेसिड्यू. माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज में लिग्निन का रेसिड्यू हो सकता है, हेमीसेलुलोज का रेसिड्यू हो सकता है. बेंजाइल अल्कोहल, फिक्स्ड ऑयल्स, पैराफिन्स, पॉलीविनाइल पाइरिडोन, पॉलीसॉर्बेट, टाल्क, इसमें क्या क्या रेसिड्यू हो सकता है, बेंजाल्डिहाइड, एंटीऑक्सीडेंट, हेवी मेटल्स एंड पेरोक्साइड्स. HPMC, हाइड्रोक्सीप्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, hydroxypropyl ethyl cellulose, HPEC. In that you have glyoxal, that is a residue. तो रेसिड्यू कभी कभी एक बार आ सकता है आपको, ये किसी ने पढ़ाया नहीं होगा, किसी को मालूम भी नहीं है कहाँ पे है ये, लेकिन लैकमन में है, मैं बोलता हूँ लैकमन में है. एंड समटाइम्स दे मे आस्क यू, तो लिग्निन वगैरह रेसिड्यू कहाँ पे आएगा, सेलुलोज डेरिवेटिव में आएगा, रखना है. Aldehyde, reducing sugar, lactose में आएगा. So residues. Diluent used in the tablet formulation in their proprietary name. तो इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है. डायल्यूएंट क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, उसका ट्रेड नेम क्या है, कैल क्रैप, मिल्क, ओके, मिली क्रैप, फार्मा क्रैप, स्टर कैल. कैल्शियम कार्बोनेट का ट्रेड नेम देखो, क्रैब आएगा या फिर कैल आएगा, कैल क्रैप, मिली क्रैप, है ना, फार्मा क्रैप, स्टर कैल. तो देखो नाम में ही पता चलता है कि कैल्शियम कार्बोनेट है. So there is a trade name or proprietary. Am I audible to you? We are going to discuss last slide. Don't worry. Yes, am I audible? So trade names are important. They used to ask you questions on this. Commonly used tablet diluent and their trade names. Calcium carbonate का trade name ये वाले है, calcrab, millicrab, pharmacrab, structural, sturcal, pharmacrab, millicrab and calcrab. So directly compressible आएगा ये. It is not directly compressible. It is insoluble in the water. ठीक है. In diabasic calcium phosphate, diabasic calcium phosphate का trade name होता है Cyphos, Kelstar, Celifarm, N-compress. Compressible है क्या? Yes, directly compressible है. Insoluble है water में. Tribasic calcium phosphate, tribasic calcium phosphate trade name क्या है? Tricapos, Trical, Tritap. Directly compressible है क्या? Yes, insoluble in the water. कैल्शियम सल्फेट जो है ना उसका ट्रेड नेम क्या है, कैल्टैप, कैम्पेक्ट्रॉल. डायरेक्टली कंप्रेसिबल है क्या, इज डायरेक्टली कंप्रेसिबल डाइल्यूट है, देन इनसॉल्युबल इन द वाटर. और माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज का ट्रेड नेम होता है एवीसेल, क्वेश्चन आ चुका है, इमोसेल, वाइवासेल. ठीक है, कंप्रेसिबल है क्या, यस, इट इज सॉल्युबल इन द वाटर. माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज सैलिसिलिकाइड, इसका ट्रेड नेम होता है प्रोसॉल. डायरेक्टली कंप्रेसिबल है क्या, नहीं, soluble in the water. Dextrate जो होता है, डेक्सट्रेट उसका
ट्रेड नेम होता है एमडेक्स, सोलिड डायरेक्टली कंप्रेसिबल है, यस है, सोल्यूबल इन द वाटर। तो उसका ट्रेड नेम होता है टैप फाइन, टैप फाइन, डायरेक्टली कंप्रेसिबल है, नहीं है, सोल्यूबल है क्या, है। फ्रुक्टोज का ट्रेड नेम होता है फ्रुक्टोसिन, डायरेक्टली कंप्रेसिबल है क्या, नहीं है, सोल्यूबल है, यस। टी टॉल का ट्रेड नेम होता है फाइन लैक, डायरेक्टली कंप्रेसिबल है क्या, यस, वाटर सोल्यूबल। ट्रेड नेम याद रखना है आपको, इजी होता है, देखो। लैक्टोज मोनोहाइड्रेट, इसका नाम होता है फास्ट फ्लो, लैक्टोकेम, जेपेरॉक्स, फार्मेटोज, टैबलेटोज, ये क्या है, सब ट्रेड नेम है, ट्रेड नेम। लैक्टोज मोनोहाइड्रेट सप्लाइड बाय फ्यू मैन्युफैक्चरर्स, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जो करने वाले हैं उनको ट्रेड नेम रहते हैं, फार्मेटोज, लैक्टोकेम, जेप्रोक्स, फास्ट फ्लो, टैबलेटोज। ये क्या है, डायरेक्टली कंप्रेसिबल है क्या, यस इट इज डायरेक्टली कंप्रेसिबल, सोल्यूबल इन द वाटर। मैनिटोल, मैनिटोल का, सॉरी माल्टीटोल, नॉट मैनिटोल, माल्टीटोल का होता है ट्रेड नेम मल्टीसॉर्ब एंड मल्टीट, डायरेक्टली कंप्रेसिबल नहीं है, सोल्यूबल इन द वाटर। maltodextrin, cycloglycidex, lycatab, maltrene, डायरेक्टली कंप्रेसिबल है, सोल्यूबल इन द वाटर। माल्टोज का ट्रेड नेम होता है एडवांटोज, एंटोज, कंप्रेसिबल है, नहीं है, सोल्यूबल इन द वाटर। मेंटोल, मेंटोल का ट्रेड नेम होता है पर्लीटॉल, पर्लीटॉल, पर्ल मतलब मोती होता है, पर्लीटॉल, कंप्रेसिबल है, यस, सोल्यूबल इन द वाटर। प्री जेलेटिनाइज्ड स्टार्च, उसका ट्रेड नेम है फार्माजेल, प्री जेल, सेपीटैप, स्टार्च 1500, स्टार आर एक्स 1500, ठीक है, डायरेक्टली कंप्रेसिबल स्टार्च होता है ये, स्टार आर एक्स 1500। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, इट इज अ डायरेक्टली कंप्रेसिबल स्टार्च, क्या होता है, डायरेक्टली कंप्रेसिबल स्टार्च होता है, स्टार आर एक्स 100। इसमें समझने की बात, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, ये सिर्फ ट्रेड नेम है, वो याद ही रखना पड़ता है, इज नो अदर ऑप्शन। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है, स्टार आर एक्स 1500, डायरेक्टली कंप्रेसिबल स्टार्च, प्री जेलेटिनाइज्ड स्टार्च, डायरेक्टली कंप्रेसिबल है, सोल्यूबल इन द वाटर। शुगर, कंप्रेसिबल शुगर से, तो उसका ट्रेड नेम होता है डाइपेक न्यूटैप, पैक न्यूटैप, नो, नो, डायरेक्टली कंप्रेसिबल, सोल्यूबल इन द वाटर। शुगर स्पेयर्स, न्यू कोर एंड न्यू पेरिल, डायरेक्टली कंप्रेसिबल, सोल्यूबल इन द वाटर। xylitol का ट्रेड नेम है xylipine, xylidap, xylipine, xylidap, directly compressible है, yes, soluble in the water, okay, so these are the different trade names of dilute used in the tablet, ठीक है। तो ये ट्रेड नेम्स याद रखना है आपको, फिर से मैं एक बार बोलता हूँ आपको, रैपिड रिवीजन फास्ट याद रखना है आपको। कभी कभी क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाता है और सिंपल से बोल रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का ट्रेड नेम, प्रोप्राइटरी ट्रेड नेम ऑफ दिस डाइल्यूएंट, कैल्ट्रैप, मिलीकार्ब, फार्माक्रैप एंड स्टरकैप। डायबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट का साइफॉस, केलास्टार, सिलीपार्म, इनकम्प्रेस। ट्राइबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट, ट्राइकोफॉस, ट्राइकोफॉस, ट्राइकैल, ट्राइटैप, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट का कैल्टैप, कॉम्पैक्ट्रॉल। माइक्रोस्टाइन सेलुलोज, एवीसेल, इमोसेल, वायोसेल, ठीक है। माइक्रोस्टाइन सेलुलोज, सैलिसिलिपाइड। प्रोसॉल, डेक्सटेट का ट्रेड नेम है एमडेक्स, डेक्सट्रोज का ट्रेड नेम है टैपाइन, फ्रुक्टोज का ट्रेड नेम होता है फ्रुक्टोपिन, लैक्टिटॉल का ट्रेड नेम है फाइन लैक, ठीक है। उसके बाद में आएगा आपका लैक्टोज मोनोहाइड्रेट का ट्रेड नेम, देखो फास्ट फ्लो, लैक्टोकेम, जेपेरॉक्स, फार्मेटोज, टैबलेटोज। मेंटोल का ट्रेड नेम है मल्टीसॉप, सॉरी मल्टीटॉल का ट्रेड नेम है मल्टीसॉप एंड मल्टीट। माल्टोडिक्स्टिन का ट्रेड नेम है ग्लाइसिडेक्स, लाइकाटैप, माल्ट्रेन। माल्टोज का ट्रेड नेम है एडवांटोज। एंडोल का ट्रेड नेम है परलिटोल। प्री जेलेटिनस स्टार्च का ट्रेड नेम्स क्या है, फार्माजेल, प्रीजेल, सिपीटैप, स्टार्च 1500 एंड स्टार आरएक्स 1500। इट्स ये जो स्टार आरएक्स 1500 है डायरेक्टली कंप्रेसिबल स्टार्च हो गए, और कंप्रेसिबल डाइपैक न्यूटैप इसके ऊपर भी आ चुका है। शुगर स्पेयर्स, न्यू कोर, न्यू पेरिल। xylitol का ट्रेड नेम होता है xylipine, xylidap।